no blood in heart. It can happen because there is no rhythm of the heart. Rhythm नहीं है तो mechanical output है. It can happen due to multiple reasons. है ना? तो cardiac arrest का मतलब है heart has stopped pumping the blood. Heart has stopped pumping the blood. What is what है? तो अगर heart blood stop करने का pumping तो क्या problem है? तो वो मैं कर रही हूँ. कौन बता रही है? कि अगर हार्ट ब्लड को पंप करना स्टॉप कर देना क्या बात नो ऑर्गन विल गेट द ब्लड तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे ब्रेन ब्लड नहीं मिलता तो कितनी देर तक सर्वाइव करेगा 3 मिनट्स वंडरफुल क्लैप करो फॉर 3 मिनट्स मास 3 to 5 minutes में irreversible damage तो we have to stop and CPR, that is cardiopulmonary cellular resuscitation, is the first aid which will help us to preserve the outcome of all our bodies. ये first aid है, this is not a definitive management. हम करेंगे definitive management, लेकिन उसके पहले हमें patient के multiple organs को hypoxic failure में जाने से रोकना है, and that's why we use CPR. ठीक है? तो that is the purpose. Understood? क्या हम सीख रहे हैं? इसी की वजह से हार्ट ब्लड का पंप करना बंद कर दिया तो वो फर्स्ट एड प्रैक्टिस वीडियो ठीक है आप स्क्रीन पे देखो बिना साइड पे देखो Okay guys, so let us start with the clinical scenario. ये जो मैंने दो लाइन लिखा है, this you can encounter anywhere. क्या लिखा है मैंने? A 62-year-old male shopping in a mall and suddenly becomes unconscious. Now this situation कहीं का भी होगा. This can happen in marketplace, ये airport hospital, ये कहीं का भी होगा. हो सकता है ना? What exactly you will do? क्या होगा अब तुम मार्केट प्लेस में घूम रहे हो सडनली एक आदमी अनकॉन्शियस हो गया नॉन रिस्पॉन्सिव है तो क्या होता है जनरली क्या होता है व्हाट हैपेंस ये chaos होता है दिस इज द chaos मतलब नो वन अटेंडेंस दैट पर्सन एंड उसको छोड़ के बाकी सारे काम करें एंड दिस chaos results in let's say his life ends out there तो हमें इस chaos में नहीं पड़ना है. We have to be heroes. How can we be heroes by learning the skill which we are talking about? CPR, cardiopulmonary cellular resuscitation. CPR सिखाने से पहले मुझे एक छोटी सी बात बताऊंगी, ठीक है? Which you need to understand before giving CPR to anyone. अब तुम्हारे पास कोई unconscious बंदा है, unresponsive बंदा है. Let's say how do you approach that patient? How do you approach? तो you have to unconscious है unresponsive है तो तुमको पहले जानना है is that person really incompetent या is सिर्फ unconscious हो सकता है कोई हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से unconscious हो गया हो सकता है कोई सिम्टोम unconscious है mentally unconscious that person is really incompetent or what we have to understand so how do we know that that person is really incompetent or what कैसे पता चलेगा Wonderful. हमने cardiac arrest का definition क्या देखा था? When the heart stops pumping the blood. ये बात क्या है? तो heart जब blood को pump करना बंद कर देगी, तो pulse will not be felt. तो हमें cardiac arrest establish करने के लिए the patient has to have no pulse. तो rule यही है, one should have no pulse. Then only one is a cardiac.
तो जब भी तुम किसी अनकॉन्शियस या अनरिस्पॉन्सिव बंदे को, विक्टिम को अगर तुम एनालाइज करते हो, तो यू हैव टू सी टू थिंग्स। एंड व्हाट इज दैट? यू हैव टू सी द पल्स एंड द ब्रीथिंग। पल्स है या नहीं है और ब्रीथिंग है ना? तो हाउ डू वी चेक द पल्स एंड ब्रीथिंग? हाउ डू वी चेक इट? एंड व्हिच पल्स वी चेक? हार्ट पंप नहीं कर रहा है, अब हमें दिखता है पल्स है या नहीं है। तो जो भी वेसल नियरेस्ट टू हार्ट है, कौन सा वेसल नियरेस्ट टू हार्ट है? कैरोटिड। So we will try to feel for the pulse carotid. Carotid the pulse of fetal will not feel radial, will not feel femoral, will go for carotid. ठीक है ना? और दूसरा, you feel the pulse, you don't see the pulse. ये तो पता है सबको, सबने पल्स फील किया है, तो तब में देख के पल्स फील कर सकते हैं ना? So when you are feeling the pulse, your eyes should be on the chest of the victim to see the respiration. तो कोई आदमी ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका एक ही तरीका है उसका पता करने का, उसकी चेस्ट मूवमेंट देख। ठीक है? तो अगर मैं सोचूं कि ये मेरा विक्टिम है, ठीक है, दिस इज माय विक्टिम, और लेट्स से दिस इज माय विक्टिम, ये अनकॉन्शियस है, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैंने बोला आंखें खोल, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, राइट? तो मैं सबसे पहले चेक करूंगी द विक्टिम इज इन कार्डियक अरेस्ट और नॉट। फॉर दैट आई टेक माय टू फिंगर्स, ठीक है, मैं अपने दो फिंगर को लूंगी और ट्रेकिया है, सब ट्रेकिया में चलते हैं, सब अपने ट्रेकिया में नाम रखे या फुल, सब ट्रेकिया में चलते हैं। अब ट्रेकिया से मैं अपने फिंगर को स्लाइड करूं into this muscle group. This is sternocleidomastoid muscle group, and we feel for the carotid pulse. You are able to feel it, right? And when I am doing this, my eyes would be on the chest of the patient. तो मैंने ऐसे स्लाइड किया और मेरी आंखें कहाँ हैं? पेशेंट के चेस्ट पे। Whether chest movement is there or not. This we will do within 10 seconds. 5 सेकंड से कम नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं. That's the tip. 5 सेकंड से कम नहीं करेंगे, 10 सेकंड से ज्यादा. अब क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है कि दोनों, I can feel the pulse and even I can see the chest move. दोनों है ना? ओके? तो मुझे बताओ, अगर दोनों है तो इस victim में cardiac arrest? No. Pulse है तो cardiac arrest मिलेंगे, और respiration है तो respiratory arrest. But the person is unconscious. So we will get it investigated, we'll find the cause. Meanwhile, person should not aspirate talks for that position. Just to create any aspiration. जब तक हेल्प आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शुगर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये चलो, ये तो कार्डियक अरेस्ट है। दूसरा हो सकता है कि रेस्पिरेशन है, आई मीन रेस्पिरेशन नहीं है और पल्स है और रेस्पिरेशन नहीं दिख रहा, then that case that's respiratory arrest, and that in that we can rescue it because heart अभी भी blood pump कर रहा है, pulse तो भी हो रहा है, it's not cardiac arrest, it is respiratory arrest. इस केस में भी जस्ट गिव द रेस्क्यू, नथिंग एल्स, ठीक है? और तीसरा जो हमें सीखना है, स्किल दैट वी हैव टू लर्न, और इट्स कम अप ऑन कार्डियक अरेस्ट. न पल्स है, न ब्रीथिंग है, न पल्स है, न ब्रीथिंग है, राइट? नाउ दिस इज कार्डियक अरेस्ट एंड वी हैव टू गिव फर्स्ट एड, सेव दिस पेशेंट एंड मेक हिम वायबल इनफ टू टेक टू द हॉस्पिटल. इसको हॉस्पिटल के अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, तो इसको हमें फर्स्ट एड देते हुए हम हॉस्पिटल तक ले जाकर इसको वायबल रखेंगे. उसके लिए हम स्किल लर्न करेंगे सीपीआर, ठीक है? ओके, गॉट इट? ओके, सो गाइस, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें ये स्किल हर इंडिविजुअल को सिखाया है एंड दे आर वेरी वेल वर्स्ड. और बच्चों को वहां पे स्कूल में एक स्लोगन दिया गया है बच्चों को, राइट? यू नीड योर टू हैंड्स टू सेव एनीवन. Just need your two hands to save anyone. तो जब मैं इस स्किल में सिखा रही हूँ, I will notice that you just need two hands, nothing else. तो just दो हाथ चाहिए दोनों इसका जानना, ठीक है ना? So what I'm trying to teach you is कि इस chaos से हमें निकलना है, and we have to learn about CPCR, cardiopulmonary cerebral resuscitation, ठीक है? And CPCR जो कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रल रिससिटेशन है, उसको होते हैं रिससिटेशन ट्रायल है. उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कोर्स और ट्रायल और उसके 3 पार्ट्स होते हैं.
compression, ventilation, and defibrillation. तो ये 3 स्टेप के बारे में हमें जानना है, compression, ventilation, and defibrillation. वाटर पॉइंट अगर अब मैं तुम्हें स्किल सिखाऊंगी और स्किल का इंपॉर्टेंस बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा 2 मिनट का इंटरव्यू ठीक है, और उसमें आई विल ट्राई टू शो यू. So Mr. B, how he is doing CPR? We don't have to do like this, but we have to know how he is doing CPR. We unconscious बंदा है, ठीक है? Now he is confused getting right. फर्स्ट राउंड में बनाए 5 प्रीवियस और नहीं करना. अरे क्या करना है? फिर ऑफ करें. साइड पे छूट गया. साइड की शायद आने के दरवाजे में हो रहा है. Trying to get respiration. The second part of the resuscitation. Right? You watch Mr. Bean. अब जैसे Mr. Bean ने किया है, we don't have to go. We don't have to do it. Right? Okay. So what Mr. Bean was trying, now that is like we don't have to do. We have to learn it in a proper manner. है ना? Otherwise, we have 3 things: compression, ventilation, and defibrillation. And as I said, कि बाहर में सिखाया जाता है, you need 2 hands to save a life. ठीक है? तो हम ये तीनों पार्ट को डिस्कस करने से पहले I just want to show you the chain of survival. एक chain of survival है. We call it chain of survival because जब तुम मोती का माला पहनते हो, even if one chain is not properly attached, that will not look proper. And chain of survival matlab there are 6 links in this chain, and when you do it one after another, then you give a good outcome का कार्य कर सकते हो. तो पहला तो जो chain देख रहे हैं, इसमें क्या बना हुआ है? मोबाइल बना है. So wherever we have a victim जो कार्डियक अरेस्ट में, इसका पल्स और ब्रीदिंग नहीं है, सबसे पहला काम क्या है? कॉल फॉर हेल्प. ये कहावत तो सुनी है कि अकेला चला बाहर नहीं खोलना. सीपीआर के केस में ये 100% लागू है कि अकेले अगर तुम सीपीआर करने का सोच रहे हो, यू आर नॉट बी एबल टू. तो फर्स्ट टाइम यू हैव टू कॉल फॉर मोस्ट हेल्प. So you always call people and ask them to join you because you have a victim in cardiac arrest. और जब भी तुम कॉल करो, then you ask them to come with a defibrillator and a manual resuscitator if you don't shoot. ठीक है? दूसरा क्या है? 2 हाथ जिसको जिससे तुम victim की जान बचा. And the second step in the link is chest position. So you learn the skill of chest. तीसरा क्या है?
current the picture. That is defibrillation. So we have to defibrillate the heart ASAP if it's a shock withdrawal. We talk about shock withdrawal. So defibrillation has to be done ASAP, as soon as possible. फिर क्या है एक एम्बुलेंस है we shift the victim to hospital. But then post resuscitation care and the sixth link is recovery. You have to follow the victim till recovery. ये out of hospital chain of survival. This is out of hospital chain of right. This is out of hospital chain of survival. Now, out there is in hospital and out hospital. जब तुम हॉस्पिटल के अंदर हो तो एकदम कार्डियक अरेस्ट हो थोड़ा सा बदलाव हो जाता है इन हॉस्पिटल यू कैन आइडेंटिफाई द सिक पेशेंट एंड प्रिवेंट द कार्डियक फ्रॉम दैट फर्स्ट वाला जो इन हॉस्पिटल उसमें एक सर्वेलेंस स्टाफ मतलब इन ट्राई टू प्रिवेंट कार्डियक पर अगर वही ना है तो अगेन ऑप्शन है योर कंप्रेशन डिफिब्रिलेशन पोस्ट रिससिटेशन केयर एंड रिकवरी और आउट ऑफ हॉस्पिटल में क्या है फर्स्ट थिंग यू टू कॉल फॉर और देन रिसर्च राइट सो दोनों चीजें छह लिंक है और ये लिंक को तुम प्रॉपर्ली फॉलो करोगे यू विल सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट ठीक है तो फिर वो वन आफ्टर एरर तो वो वन आफ्टर एरर ओके ये फ्लो चार्ट है मेरा इकलौता काम है इस रूम से जब तुम निकलो तो ये फ्लो चार्ट तुम्हारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है because this is the flow chart which is similar. Okay? So guys, first step in any unconscious victim. अगर तो first step देखो, तो first step is verify scene safety. जहाँ भी cardiac arrest हुआ, right, unconscious perfusion, तो वहाँ chaos मची है, you cannot perform. First thing you have to do the scene safety. अगर breach था, जब मेरे house में कुछ problem हुआ है